Welcome dear student to this session of manufacturing process practical. This is our second session, but in previous session we had introduction with our manufacturing lab. Now in this session we are going to start with our first experiment, that is demonstration of sand mix and sand mold. Now, since this is a virtual practical, we can't actually demonstrate various sand mix and sand mold, but through a video we will try to understand how the mold is prepared, the procedure for mold preparation, etc. So let's first see theoretically what we will cover in the actual experiment. Our experiment number 1, demonstration of sand mix and sand mold. So aim of this experimentation is what? Demonstration of sand mix and sand mold. What are the objectives? Different objectives are no different proportion of mold ingredients. हमें proportion देखना है mold ingredients के, that is mold ingredient में क्या होता है? Sand. And in sand is particularly made with silica sand, clay, water and some additives to improve the property of mold. Each constituent taken in proper proportion. So this proportion we have to see. Second objective is demonstrate preparation of sand system. सारे constituent लेने के बाद अलग अलग proportion में सैंड कैसे बनाते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन. थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट प्लेसमेंट ऑफ पैटर्न, हाउ टू प्लेस पैटर्न इन द मोल्ड फ्लास्क. फोर्थ वन इज अंडरस्टैंड रैमिंग ऑफ सैंड अराउंड पैटर्न, सैंड को प्रॉपरली रैम कैसे करना है. एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेट प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड. सो all these objectives we are going to fulfill today through this virtual lab. Now the first diagram here shows a two-piece pattern or split pattern. So here you can clearly see in upper half of the pattern there is the dowel pin, and for that dowel pin the lower half contain matching dowel holes, and this one shows a completely prepared mold which is in two half, cope half and drag half. Now what material is required for this demonstration? The material required, first one is a molding sand, second one is a facing sand. Everybody knows what is molding sand, what is facing sand. मोल्डिंग सैंड इज ओवरऑल जिससे मोल्ड बनता है उसे हम मोल्डिंग सैंड कहते हैं. फेसिंग सैंड इज यूज एट द फेस वेयर मोल्टन मेटल एक्चुअली केम इन कॉन्टैक्ट विद द सैंड. उस जगह पे जो सैंड यूज होती है दैट इज द फेसिंग सैंड. बैकिंग सैंड, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड विद द बैकिंग सैंड. Parting sand, it is a very fine sand which is used for avoiding sticking of object with each other. Then we will require core. Core is optional. If there is a hole in the pattern, then and then only we will require a core. After that we will require pattern. We will require two boxes, that is cope box and drag box. After that bottom board,
Bottom board is used to support the mold while in preparation, etc. What the tools and equipments we will require? Sprue pins in two quantity. One is to construct sprue, it is one of the gating system as we had seen in second unit, and second sprue pin is used to construct riser. Chaplet, optional है chaplet. Gate cutter for manually constructing the gating system. Trowel for movement of sand. Vent rod generating vent. स्लिक हमने पहले यूनिट में देखा है, स्लिक क्यों यूज होता है? फॉर शेपिंग द मोल्ड. बेलोज फॉर रिमूविंग द एक्स्ट्रा सैंड, एक्सेट्रा. नाउ लेट्स सी quickly what are these equipments. So first equipment is a flask, that is molding box. A molding flask is one which holds the sand mold intact. Depending upon the position of the flask in the mold structure, it is referred by various names as drag, cope and chick. It is made up of wood for temporary application or more generally of metal for long-term use. So in flask, drag is a lower molding flask, cope is a upper molding flask, and chick is an intermediate molding flask using 3-piece molding. So chick is not always compulsorily used. Generally we will see drag and cope. Pattern हम सबको पता है. Pattern is a replica of final object to be made with some modification. The mold casting is made with the help of pattern. Parting line, it is the line between cope and drag. Bottom board, this is board normally made of wood which is used at the start of molding, making pattern. The pattern is kept on the bottom board and sand is poured on it and then ramming is done in the drag. तो bottom board support करता है पूरे mold को. Facing sand हमको पता है, it is specially prepared sand which is placed around the pattern. पैटर्न के अराउंड रखते हैं और मोल्टन मेटल इसी सैंड के कांटेक्ट में आता है. विच हैज सुपेरियर प्रॉपर्टीज विथ रिगार्ड टू रिफ्रैक्टरीनेस, परमेबिलिटी एक्सेट्रा. दिस विल इंश्योर बेटर सरफेस ऑन द कास्टिंग. कोल डस्ट इज वन ऑफ द एडिटिव वी जनरली यूज इन आवर वर्कशॉप. So why coal dust use? The small amount of carbonaceous material sprinkled on the inner surface of the molding cavity to give it better finish to casting. So that's why coal dust is used. Molding sand is a mixture of silica, clay, moisture in appropriate proportion to get desired result, and it surround the pattern facing sand while making the mold. The molding sand is the mixture of what? Silica, clay, moisture and most of the time some additives. Backing sand is what? It constitutes most of the refractory material found in the mold. This is made up of used and burnt sand. Core, it is used for making hollow cavity. Now we will start with we will revise some of the gating elements. Sprue, the passage through which molten metal from the pouring basin reaches the mold cavity. In many cases, it controls the flow of metal into the mold. Runner, the passage in parting plane through which molten metal flow is regulated before they reach the mold cavity through ingate. Ingate, the actual entry point through which molten metal enter mold cavity, is the actual entry point, that is ingate, or simply called as gate. Riser, it is reservoir of molten metal provided in the casting so that hot metal can flow into the casting where there is a reduction in volume of metal due to solidification. मतलब whenever there is a liquid metal shrinkage, riser is used for
compensating the shrinkage in metal. Next one is chills. Chills are used for controlling the directional solidification. हमने ये देखा है chills and wedges. Chills are mechanical objects which are placed in the mold to increase the cooling rate of molten metal. और कूलिंग रेट इंक्रीज करके हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हम अचीव कर सकते हैं. हमारे हिसाब से सॉलिडिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है ये हम चील के हिसाब से देख सकते हैं. सो व्हाट इज़ प्रोसीजर? प्रोसीजर सिंपल प्रोसीजर है इसके लिए. फर्स्ट प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर पॉइंट बाय पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट, प्लेस द पैटर्न ऑन द ओवरबोर्ड. तो बॉटम बोर्ड होता है उसके ऊपर आपको पैटर्न को प्लेस करना है. प्लेस द ड्रैग, फ्लास्क मोल्डिंग फ्लास्क का ड्रैग जो है या जो पहला पोर्शन होता है ड्रैग, दो हाफ उसे कहाँ प्लेस करना है, अराउंड द पैटर्न विथ अप साइड एंड स्प्रिंकल द पार्टिंग सैंड एट द बॉटम. पहले पार्टिंग सैंड आपको पैटर्न के ऊपर स्प्रिंकल करना है. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, fill the molding sand over the pattern, pack, ram, jolt and squeeze. मोल्डिंग सैंड आपको पैटर्न के ऊपर रखना है. पहले पार्टिंग सैंड आएगी, फिर उसके बाद मोल्डिंग सैंड. अब मोल्डिंग सैंड आपको कैसे उस पर पैक करते जाना है, पहले पैक करना है, उसके बाद रैमिंग, आफ्टर दैट वाइब्रेशन प्रोवाइड करना है उसे, जॉल्ट एंड फाइनली स्क्वीज. तो इस ऑपरेशन से आपको धीरे धीरे उसे क्या करना है, सैंड पैटर्न के ऊपर पैक करते जाना है. नेक्स्ट वन, लेवल द बॉटम ड्रैग सरफेस बाय लेवलर एंड टर्न ओवर द ड्रैग. पूरी तरह से पैक होने के बाद लेवलर से यूज़ करके क्या करना है आपको, उसे एक सिंगल लेवल में लाना है. आफ्टर दैट ड्रैग इज़ रेडी, नाउ टर्न इट ओवर. पैटर्न फिर से ऊपर की तरफ आएगा, आपको पूरा ड्रैग आपको टर्न करना है. नाउ स्प्रिंकल द पार्टिंग सैंड, प्लेस द कोप ऑन द ड्रैग टू सूट द ड्रैग स्लॉट. ड्रैग टर्न कर दिया, अब फिर से ऊपर से पार्टिंग सैंड डालना है आपके पिछले स्पेस पर, जिस स्पेस पर क्या है पैटर्न लगा हुआ है. आफ्टर दैट प्लेस कोप ओवर द ड्रैग. उस साइड से आपको क्या रखना है, उस कोप पार्ट प्लेस करना है. Now select the in and out gate in the drag, place the sprue pin. स्प्रू और राइजर जनरेट करने के लिए आपको स्प्रू पिन इसी समय उसको प्लेस करना है. फिल द मोल्डिंग सैंड अराउंड द स्प्रू पिन पैक, रैम जॉल्ट एंड स्क्वीज एंड लेवल द सरफेस. मेक द वेंट होल ऑन बोथ द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ वेंट वायर. इसके बाद आपको वेंट होल बनाने हैं. रिमूव द स्प्रू पिन एंड सेपरेट कोप फ्रॉम ड्रैग. अब आपके दोनों मोल्ड रेडी है. दोनों मोल्ड में आपने सेम प्रोसीजर फॉलो की है, एक के बाद एक. स्प्रू पिन को रिमूव कर दिया, आपकी गेटिंग सिस्टम मैन्युअली रेडी हो गई. उसके बाद आपको क्या करना है, रिमूव द पैटर्न केयरफुली विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप इन, कट गेट वेज टू फ्लो द मोल्टन पैटर्न. पैटर्न को रिमूव करना है केयरफुली, और उसके बाद पार्टिंग सरफेस पे आपको क्या करना है, रनर और इन गेट मैन्युअली कट करना है. आफ्टर दैट फॉर्म द फनल शेप ऑन रनर एंड राइजर, होल्ड टू पोर द मोल्टन मेटल ऑन द टॉप ऑफ द कोप बॉक्स. कोप बॉक्स पे आपको एक बेसिन बनाना है, स्पोरिंग बेसिन, दैट इज फनल शेप, जो कहाँ रहेगा आपका राइजर के पास. आफ्टर दैट lastly join the two boxes with clamp. Now the mold is ready to pour the molten metal. पूरा आपके इनगेट बन गया, रनर बन गया. उसके बाद आपको दोनों बॉक्सेस क्लैंप से एक दूसरे के साथ परमानेंटली फिक्स करने हैं. परमानेंटली इन द सेंस टाइटली फिक्स करने हैं, ताकि मोल्टन मेटल जब आप पोर करो तो वो कहीं से लीक ना हो. सो दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस. नाउ आवर मोल्ड इज कम्प्लीटली रेडी फॉर पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल. यहाँ हमारा प्रैक्टिकल एंड हो जाएगा. नाउ
while आफ्टर परफॉर्मेंस, जब भी आप परफॉर्म करोगे और ये प्रैक्टिकल जब आपको लिखना है उस समय की बात है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ हमने 12 प्रोसीजर लिखे हैं, तो 12 ऑप्शन में आपको क्या क्या करना है। पॉइंट नंबर 1 के लिए ऑपरेशन यहाँ पर लिखना है, जो टूल रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पॉइंट नंबर 1 क्या है आपका, प्लेस द पैटर्न ऑन द ओवरबोर्ड। तो यहाँ पहला ऑपरेशन में आएगा प्लेसिंग द पैटर्न ओवर ओवर द बोर्ड। टूल रिक्वायर्ड, ड्रैग ओवरबोर्ड पैटर्न, और यहाँ उसका सिंपल छोटा सा स्केच आएगा। तो ऐसे ही आपको हर पॉइंट के लिए ऑपरेशन लिखना है, टूल रिक्वायर्ड लिखना है और उसका स्केच बनाना है। ऐसे टोटल आपको 12 पॉइंट के लिए ये प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। टोटल 12 पॉइंट के लिए प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक साइन ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड साइन ऑफ सब्जेक्ट टीचर एंड रिमार्क ऑफ इंस्ट्रक्टर इन दैट. So after successfully completion of this demonstration, what will be our result? Demonstration of sand mix and sand mold has been done successfully. Conclusion, in your own word आपको लिखना है कि आप इस डेमोन्स्ट्रेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये कंक्लूजन हर किसी का अलग अलग आएगा और ये खुद के वर्डिंग में आएगा. सो यू हैव टू कंक्लूड इन योर ओन वर्ड. After that, there are some Viva question to which they are there for you to write as well as remember and can be asked in a practical Viva. So this Viva question will be like, what are different type of base sand? What are desirable properties of molding sand? What are the method used for sand molding? What is core, etc. So these are reference. Workshop Technology Volume 1 Hajra Chaudhary. For this practical, Workshop Technology Volume 1 V.S. Raghuvanshi. Manufacturing Science Ghosh and Malik. Workshop Technology by H.S. Bava. So these are few references, and with this our practical will be completed with a demonstration. Now we will start a video demonstration right now. To make a mold for this loose pattern, the molders start with the flask having its drag or bottom side up. Sets the pattern, in this case a candlestick base, on the follow board which is between the two halves of the flask. Then he dusts the pattern with the parting dust so that the sand will not stick to it. This method is for lower volume production as it is not on a higher production match plate. Using a riddle, they put sand next to the pattern without any lumps in it. Then they fill the flask and hand the team the sand. For tighter compaction, they use the pneumatic ram. They strike off the surface to make it flat. Then they set on the bottom board and turn the flask over. With a spoon-like founder's tool, he cuts the parting line and lays out the feeding system.
After assembling the coat, or top half of the flask, he dusts the drag. Two dowels will form the down screws for the metal to enter the casting. After hand peening the sand, he further compacts the sand with an air rammer. After striking off the top, they draw the coat straight up using the flask's alignment pins. Constantly uses a compressed air nozzle to blow away loose sand. At the bottom of the down screws, he cuts pouring basins. The idea is to always have laminar or smooth flow of the metal so it will not be churned and become drossy. With a thin metal cutter, he cuts the runner path for the metal. Once the main runners fill, the side runners feed metal into the casting at the gate where the feeder and the casting join. First, he wraps it with a rubber mallet to break the sand's grip. To pull the pattern from the sand, since this pattern is metal and is too heavy for the molder to pull it out with his fingernails, he inserts a machine screw into the threaded hole and lifts out the pattern. With a brush, he brushes off any loose sand.
layer screens are to hold back any drossy lumps in the molten metal. They add weight so the liquid metal will not act like a piston and lift and separate the mold. This metal is aluminum. So this is the complete procedure of molding. Now we will see one demonstration how to make a green sand. हमें सैंड का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखना है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, हाउ टू मेक अ ग्रीन सैंड. To do is going to be making some green sand to cast the slingshot with. So for this I'm going to be using some kiln dried sand as usual, and this is incredibly fine sand. You can also use play sand, but it's not as fine. And the other ingredient that we're going to need is some bentonite clay. This is very fine ground bentonite clay, bought for very cheap off the internet from eBay. You can also get bentonite clay from cat litter, but you've got to grind it up yourself, and sometimes it's not quite as fine as this. And this was actually cheaper and it saves time. Generally, the finer that both of your materials are, the more accurate your green sand is going to be for casting, since there'll be no bumps in the moulds. So now I'm going to be mixing them together, and I'm going to mix them together dry so that I can make sure that it's all mixed evenly. And I'm going to be using roughly 10 to 15% bentonite clay and 19 to 85% normal kiln dried sand. So I've just got a 1 gallon plastic bucket here, and I've got some kitchen scales here, and it's zeroed. And what I'm going to do is I'm going to take my sand and I'm going to fill up the bucket so that I've got roughly just under about how much green sand I think that I'm going to need. I'm going to see how much that weighs and then add 10% or 15% of that in the bentonite clay. It got too heavy for my kitchen scale, so I'm just going to be using this luggage weigher. So the bucket was roughly 4 kilograms, so I'm going to add around 400 grams of bentonite clay. I first weigh almost exactly on the scales, and then I mix it really thoroughly in with the sand so that it's evenly spread out. You don't want any clumps of just one material, otherwise it won't work. Now, just using a spray bottle filled up with water, I'm going to slowly add moisture to the sand. You want to do this really slowly and make sure to thoroughly mix it, because you don't want to make this overly wet. It's much easier to make it too dry. Then you can just add more water, because if you make it too wet, you're going to have to wait for it to dry out, and that can sometimes take days. Obviously, as you add the moisture, you need to make sure to thoroughly mix up all of the sand. So the sand looks like once I've finished making it, and I've only added a very small amount of water. The way to test whether it's the right amount of water is you can pick it up and then squeeze a ball of it like this, and then it should be make into a clump like this. You should be able to handle it without it breaking. Then you should be able to break it cleanly. So I'll just do that again. Pick it up, squeeze it, and it's like this, and it breaks cleanly. And then it's a really fine, good powdered sand that you can use for casting. If your green sand's too dry, then it will be very crumbly and you won't be able to handle it once you've squeezed it into a ball. It won't break cleanly, it'll just crack. And if it's too wet, it will stick to your hands, and you don't want that, and it won't break cleanly either, it'll just crumble. So I've now made this box that you can use.
So this is complete demonstration of sand making as well as mold making. So here we had completed our virtual practical. Now don't forget to mention your name in the comment for attendance on the same day. It is very important. So good day. We will meet in next theory lecture on Monday. Thank you, students.